Okay, good morning students. This is a lecture number 6, and in this lecture we will solve a numerical on a parallelogram law. So from parallelogram law we have got it the value of r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. So in this question, the question says the resultant of two forces p and q acting at a point is r. Simply there are two forces are given, p and q, and the resultant of the forces, that particular forces are r. दो फोर्स गिवन है p और q, उनका रिजल्टेंट क्या है, r है. सो फ्रॉम दिस हम इक्वेशन बनाते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. तो सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. Next, the resultant r gets doubled. Resultant r double हो जाता है. The resultant r gets double when, so there are two conditions given, when q is either double or its direction is reversed. Means r double कब होता है, जब q की वैल्यू डबल हो जाती है या q की वैल्यू रिवर्स हो जाती है. मीन्स द वैल्यू ऑफ q इज माइनस q. रिवर्स का मतलब यही हुआ ना. सो कंडीशन नंबर फर्स्ट, दैट r gets double when q is double. So put the value in this formula, simple resultant formula. So the value come r gets double, means r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r इज इक्वल टू पी स्क्वायर. और कब डबल हो रहा है, जब q डबल हो रहा है ना, q इज डबल, पी स्क्वायर प्लस q की जगह क्या रख देंगे, 2q स्क्वायर, देन 2p, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 2q. सो 2q cos theta. We will solve this equation, and this is 4r square is equal to p square plus 4q square plus this is 2 to 4 pq cos theta. So this is the equation number 2. And go in next condition, r gets double when q is either double or its direction is reversed. So next, r gets double when q is reversed. the q की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है. अभी q की वैल्यू क्या है, q, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कब हुई, जैसे माइनस लगा दो, उल्टा कर दो इसको, जस्ट अपोजिट, द डायरेक्शन इज अपोजिट. सो पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, r gets double means put the value, this is 2r square, r square 2r square, p square plus the value of q is minus q, reverse, minus q square plus 2p, this is minus q cos theta. So we will solve this equation. This is 4r square, this is 4r square, we can write this 4r square and this is p square, q square minus minus plus, this is minus 2pq cos theta. So this is the equation number 3. So there are three conditions are given according to this question. Now reverse, show that the relation between p, q and r is √2, √3 and √2. Now ये हमको relation find out करना है. So there are three equation comes and we have to find the relation between p, q and r. हमको p और q और r में relation find out करना है. It means इस इक्वेशन में r p q r given. So हमको क्या करना है, we will cut these terms,
पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा. ओके, सो यहाँ तक हमने कर लिया है बेसिकली. So the from condition number 1, the resultant of two forces PQ acting at a point is R, means R square is equal to P square plus Q square to PQ cos थीटा. दोनों का रिजल्टेंट गिवन है, दो फोर्स का, तो सिंपल यही हमारे पास फॉर्मूला है. देन R गेट्स डबल, R डबल हो जाता है. कब होता है? व्हेन Q इज डबल, व्हेन आइदर Q इज डबल और इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, मीन्स Q डबल करते हैं तो इसमें हमने R की जगह, R की कब डबल हो रहा है? जब Q की हमने इसकी वैल्यू डबल रख दी. ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी Q की जगह हमने डबल रख दिया, तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है. नेक्स्ट आगे R कब डबल हो रहा है? जब Q इज रिवर्स्ड, मतलब दिस R 2R स्क्वायर, दिस इज P स्क्वायर, Q की जगह माइनस Q, दिस इज माइनस Q, इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 4R स्क्वायर, P स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos theta. So there are three equation comes and we have find out the relation between three terms P and Q and R. Okay, so now we will cut these terms from this equation and how it is possible. So we will solve these terms. So this is 2PQ cos theta, this is minus 2PQ cos theta. So if I will add this and this equation, then this value will disappear. So at equation number 1 and 3, इक्वेशन 1 और 3 को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास? द वैल्यू कम्स 5 R स्क्वायर इज इक्वल टू P and P, 2P स्क्वायर, 5R स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर प्लस Q and Q is 2Q square, 2Q square. This is the equation number 4. And next, so we will using this equation. Next we will skip this term 4PQ cos theta, na? So how it is possible? If I will multiply this equation by 2 and add in this equation, then this term we will remove. Okay, so multiply equation 3 by 2 and add in equation 2. Okay, then this is 8. If I will multiply this equation by 2, then this is 8R square, and add in this 4R square, to the value comes 12R square. Okay, is equal to, this is 2P square, this is P square, so 3P square, this is 2Q square, and this is 4 square, this is 6Q square, this is 4PQ cos theta, 4PQ cos theta plus or minus, this is cancel out. So this equation is equation number 5. Okay, now from equation number 4 and 5, from equation number 4 and 5, this is, we can solve for the equation 4 5 को हम solve करते हैं. We cannot naming this equation 5, we will solve we will divide by 3. So this is the 4R square is equal to P square plus 2Q square. This is the equation number 4, because हमको आगे इक्वेशन सोल्व करने में आसानी होगी.
This is easy to solve it. This is equation number 5. Clear? So these two equations are important. So from equation number 4 and 5, if from equation number 4 and 5, if I will solve, means equation 4 minus equation 5. So 5r square is equal to 4r square minus 4r square. So this is r square, 2p square minus p square. This is p square, and 2 cube minus 2 cube, this is cancel out. So r is equal to p. This value comes. Again, from equation 5, put r is equal to p. Then this value is 4 p square plus 2 q square, and this is 3p square is equal to 2q square. So this is 3 by 2 p square is equal to q square, and q is equal to 3 by 2 p. So we have got the value of r, and we have the value of q. r की value आ गई, q की value आ गई. So we put the value in this equation. Then p, q, r. p की value क्या है? We have take only p. q की value, we have changed all the value in p, in term of p. p and r value is p. Okay, the p cancel out. Then p, q, r is equal to, this root 2 comes here, root 2, root 3 and root 2. So this is a very simple numerical. So we have find out this relation p, q, r is equal to root 2, root 3 and root 2. So hence proof. Okay, so हमने एक ही फॉर्मूला काम मिला, आर स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का. एंड देयर इज अनदर फॉर्मूला इज देयर कि tan alpha इज इक्वल टू q sin theta plus p plus q cos theta. So for parallelogram law, one formula is this, second formula is this. There are two formulas enough, and from these we can find out the resultant and the direction of resultant from here. Okay, now guys, thank you, and in next lecture we will discuss about triangle law of forces. Okay, thank you.